Good afternoon, student. Welcome to the VVPS e-learning classes. Children, in the previous video, you all have learned about the role of the Constitution. Today, I am going to start the new topic, that is key features of the Indian Constitution. The Government of India Act 1935 presented a set of rule and procedure which had the stamp of democracy. इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 1935 में, जिसके ज़रिए उन्होंने डेमोक्रेसी को उसके कुछ रूल्स और प्रोसीडियर को कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में. So it was under the cabinet mission plan of 1946 that the Constituent Assembly was to form a constitution for India, and its main purpose was to form a constitution of India. The Constituent Assembly started its tasks on December 9, 1946. मतलब उनका काम स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 से. It took the Constituent Assembly 2 years, 11 months and 18 days of hard work to complete the Constitution. Children, remember this thing, that to make a constitution and it take the time up to 2 years, 11 months and 18 days. It took such a long time because of the several reasons. मतलब इसको बनने में इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि उसके कुछ reasons थे. पहला, the first one is, first the country was made up several communities speaking different languages, following different religions and having distinct cultures. So meanwhile India was partitions and Pakistan came into being on 14th अगस्त 1947. इसका मतलब उसी समय भारत में पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था. कब? 14th अगस्त 1947 पे. So some of the princely state had yet not decided whether to remain with India और मार्च विथ पाकिस्तान. उसमें से कुछ ऐसे राज्य थे जो अभी तक कंफ्यूज थे कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान जाना है. They were communal riot in the wake of partition. Therefore, the most important task before the Constituent Assembly was to maintain the unity and integrity of India. क्योंकि Constituent Assembly को ये भी ध्यान रखना था कि उनको अपना टास्क भी पूरा करना है और देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे. The linguistic means there are different languages. Cultural, regional diversity also had to be given due respect and proper accommodation. उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे देश में यूज़ होते हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. Moreover, great social and economic inequality prevailed in India, with the majority of people being illiterate and living in the stark poverty. इसके अलावा भारत में उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो इलिटरेट थे. इलिटरेट का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे. एंड देयर वाज आल्सो ए स्टार्क पॉवर्टी, मीन्स मैक्सिमम पॉवर्टी. उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी भी हमारे देश में चल रही थी. The member of the Constituent Assembly grappled with this problem and concern under the leadership of Nehru, Patel, Rajendra Prasad and Maulana Azad. तो इसके लिए वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कंसर्न करने के लिए उन्होंने बहुत से लीडर्स की हेल्प ली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद भी थे. तो चिल्ड्रन, अप टू हियर इट इज़ क्लियर. चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट. यू सी हियर, the Indian Constitution has certain key features which are part of its basic structure. Indian Constitution के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए. What are they? The first one is the federalisms. Second, the parliamentary form of government. Third, separations of power. Fourth, fundamental rights. And the fifth one is secularisms.
These are the 5 main features. In the next video, I will explain this all point to the number wise. Means first I will explain in federalisms, then parliamentary form of government. After that, separations of power, in which government has been divided into the 3 powers, that is the executive, legislature, and the judiciary power. And after that, we will discuss the how many fundamental rights are there in our constitution. And in the last, I will discuss about the secularisms. So children, up to here it is clear. The main point that you must have to remember is that first, the Constitution of India was made by the Constituent Assembly, and it was started in which year? It was started in 9 December 1946. मतलब इसकी मेन डेट जो है वो आपको ध्यान रखनी है, कब बना था, कितने समय में बनाया गया था, और इसको बनने में कितना समय लगा था. सो इट वॉज टेकन नियर अबाउट 2 years 11 months and the 18 days. Okay, these 2-3 things in this line you must have to remember it, or children you must note down it. Okay, thank you class.